IAS officer or IPS? Yes, IFS. You want to go for IFS? Why? Haven't decided yet. But फिर भी कुछ तो मतलब होगा ना, सरफरोश देख के अच्छा लगा होगा कि IPS बनना है, या वो कौन सी थी शादी में ज़रूर आना, समथिंग लाइक दैट, वो भाग जाती है लड़की और फिर वो IAS बनता है. Yes. So a very good morning people online. So हाँ exactly. अरे sometimes revenge is a good motivation यार. अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुम्हारा revenge motivation है. Motivation तो कुछ भी हो सकता है. Yes. So those who are online, आवाज़ जा रही है हमारी? Okay, तो I can see शाइस्ता and yes, Prasanna is here, Soni is here, Saif, फजर मजीद. ओके, तो क्या किया ग्रेजुएशन में, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ. ये सबसे पूछूंगा. ऑनलाइन लोग जो बात करना चाहते हैं वो बात करने का इंतज़ार करें, और जो बात करना नहीं चाहते हैं, लिख के बताना चाहते हैं अपने बारे में, वो लिख सकते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम. यस. So bachelor's in arts. With- Third year just. ओके, ग्रेट. फ्रॉम DU? No sir. फिर? I'm JPRE. ओके, गुड. सो IAS बनने के लिए या UPSC क्यों देना है, मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना. इंसान जीवन में कुछ करता है तो कुछ रीज़न है. ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस माय बाइलिंगुअल एटीट्यूड, और यू वांट टू गो कंप्लीटली विद इंग्लिश? ओके ना, चलेगा. हाँ, मतलब क्लास थोड़ी है, पढ़ाना थोड़ी है, बात करनी है, बताना है कि करना क्या है. यस, ग्रेट. सो क्यों, मतलब कुछ तो होगा, मोटिवेशन होगा. व्हाई यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, or why you want to clear why this exam only? Why not any other exam? Why not bank? Why not SSC? Why not railways? Sir, I have left 2 jobs. Okay. So उसके बाद सोचा मैं पढ़ाई करूँ. बस बढ़िया. पावर की पैसा? सर दोनों में से हटा दे तो कुछ कर ले. नहीं, मतलब UPSC क्यों चाहिए? पावर के लिए चाहिए, पैसे के लिए चाहिए? थोड़ा पावर ज़्यादा पैसा. अभी वो पकड़ाई गई है ना एक मोहतरमा. हाँ, पैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा. गुड. श्वेता, यू फ्रॉम? फरीदाबाद. सो यू हैव डन ग्रेजुएशन, कंप्लीट हो गया या चल रहा है? ग्रेजुएशन हो गया. ओके, क्या किया? BBA. हाँ, आई नो. IP, इंद्रप्रस्थ. ओके, सो क्यों, मतलब इधर कैसे, कॉर्पोरेट में ना जाके इधर कैसे? Sir, because life में money does not attract me much. Okay. And I always wanted to do something in social sector itself. So why not? You are a BBA, do an MBA in social something. I can go for MSW also. Pitch the investors, go in Shark Tank, open an NGO. That's good. Sir, that would be option B. That would be option B. I have age and I have time, so I'm. Okay, that's great. Yes, I can see people online. Shaista, you are visible. If you can introduce yourself, from where you are and why you want to be an IAS officer, or why you want to be in this exam. Hello. Yes. Good morning, everyone. I am Shaista from Jammu Kashmir. I have done my bachelor's in humanities from Indira Gandhi National Open University. Currently, I am doing the master's in sociology from the same university. Well, why do I want to become an IAS? It has a huge story, but I will be a brief. Actually, I want to be among the people. I want to live among the people. And to be with the people, I think this is the best option, since people can say that you can join the NGO and go and help the people. But I think for helping the people, we need a bit of accountability, responsibility, authority. And I think in this services, I can better get those things, so I can serve the people better with a bit of authority, with a bit of accountability. Since in other things like NGO or corporate sector, there is not a bit of authority in you. Like I have been in the corporate sector before this too. I was working in automobile unit, wherein I was working as a process manager. But somehow I was not given the authority to somehow deal with the people.
Great. But Shaista, I think a better option is go. You can go for politics also, and there you will get authority, there you will get accountability, there you will be with people, you will have access to power, everything. So yes, but I think in politics you have to be a bit of diplomatic. You have here you have to be a lot of diplomatic. In UPSC, you have to be diplomatic on a very higher grade. Yes, sir, that is true that I have to be diplomatic here too. But in politics, what happens is that you at times you have to you have to, somehow I feel you do not, sir, I don't know, I'm not able to. That's okay. It's okay. Doesn't matter. Day one, it's okay. It's good. You can speak. That is a big part. So, where from Kashmir? Sir, Srinagar. Srinagar. Proper Srinagar or? Yes, sir, Srinagar. So, Srinagar from New Town or the downtown? New Town. Okay. Yes, sir. Great. Fine. So, yes, I think this Kungs or Kungs, I don't know how to pronounce your name. If I'm audible to you. Okay. Anyone else? I think Prasanna, if you can speak out. Shaista, you can mute yourself. I'm in study hall. Okay, you can type what you do. Anyone else who is willing to interact with us out here, or should I start torturing you all? और क्या मेरी class I'm going to take 2 subjects. One is history, another is economy. Okay, so those कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. क्या लिखोगे? कुछ मत लिखो. समझो. See, in the meanwhile, those who want to interact, they can raise their hand, and I'll put you on chat. And those who, in the meanwhile, those who are in a study hall or somewhere where they cannot speak loudly, they can just type in the chat box. That is also visible to us. ठीक है. So issue is that this whole foundation course, all of you are new, okay, and you have an experience. So what happens here is the mindset. Don't come. First of all, जिस भी mindset से आप पढ़ते आ रहे हो ना, KG से लेके PG तक, उसको दरवाजे के बाहर छोड़ दो, उसको वहीं मेट्रो स्टेशन पे छोड़ के आ जाओ. क्योंकि this exam is completely different. I'm not going to fall into that कि प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, किसका क्या सिलेबस है, लीस्ट इंटरेस्टेड. वो आपको सबको पता है, इतना सब पढ़ के आते हो, इतनी सब तैयारी होती है. आई थिंक एक ओरिएंटेशन एक पार्ट हो चुका है. ओके. The difference between this exam, why this exam is tough, the bigger question is कि ये एग्जाम में सर ऐसा कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए कि इतना मुश्किल हो जाता है. कहने को आप बोलते हो कि 6th क्लास की NCERT पढ़ो, कहने को आप कहते हो कि वो 10th क्लास की NCERT पढ़ो, जो हम आज से 5 साल 8 साल पहले छोड़ के आ गए, और वो बच्चों वाली चीज़ें पढ़ने को बोलते हो और वो मुश्किल हो जाती है. The problem with this exam or the added advantage with this exam is in all the exams जितने भी हमने अब तक आपने दिया ना, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, या आपने उससे पहले का, आज तक हिंदुस्तान के किसी एग्ज़ाम ने आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछा ही नहीं. हम जिस एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं, इट हैज़ ऑलवेज आस्क्ड अबाउट हाउ मच यू कैन रिमेंबर, टू सच एन एक्सटेंट कि छोटे थे तो बोलते थे टेबल याद करके आओ. मैथ्स याद करने की चीज़ है. फिर वही बड़े होकर बोलते हैं मैथ्स याद करने की चीज़ नहीं है. लेकिन आई थिंक ये एक तो मैथ्स की क्लास का तो ये स्टैंडर्ड था ना कि अगर आपको 20 तक के टेबल याद नहीं है तो आप अच्छे स्टूडेंट है ही नहीं. आप उससे ज़्यादा एफर्ट ये लगवा देते कि मल्टीप्लिकेशन को फिंगर टिप्स पे कैसे किया जाता है, तो शायद वी वुड हैव डन समवॉट बेटर. सो दिस इज़ वन थिंग. सो नो वन हैज़, एवरीवन हैज़ सेड कल ये याद करके आना, और हम उसी मोल्ड में हैं कि हमें याद करना है, हमें मेमोराइज़ करना है. यहाँ आपका मेमोरी का जो रेशियो है ना, वो 30% से ज़्यादा नहीं है. 70% is your understanding. 70%, I'm talking about history, economy, both. 70% is your understanding. Whether you take GS history or whether you take GS economy, there only those people, what is the difference between, there are a million people will appear in exam, a handful out of it get selected. सर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसीजर में है, फंडामेंटल्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
in this whole examination process is fundamentals. Only those whose fundamental is clear, वो उसका एग्जाम निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा. आप कितनी किताबें पढ़ लो, नहीं निकलेगा. I can give this in writing, because if your fundament, you're like, everyone is here, everyone has heard about the Ukraine-Russia crisis, and I think by listening to the news channels and the newspapers, you are very well versed with the history, economy, geography. सब कुछ पता चल गया कि रशिया का वॉर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. Okay, there's a big one from, I think, Prasanna. Okay, I'll just come back to you. So, but you know what UPSC is going to ask? प्राची, क्या लगता है, क्या सवाल आएगा इस पर? सवाल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा. क्या आएगा? ठीक है. वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता. प्रीलिम्स का बात करो, प्रीलिम्स की बात, पीटी की बात करो. ये तो मेंस का हो गया. आईआर का सवाल. पीटी का क्वेश्चन बताओ. आपको एक टॉपिक दे दिया मैंने, रशिया यूक्रेन वॉर. टॉपिक ये है, क्या क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में? सर, कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी. गुड. क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी पे. ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ. क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी पे, क्वेश्चन आएगा यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज पे, क्वेश्चन आएगा किसकी लैंड बॉर्डर्स हैं, किसका नहीं. वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आएगा. सो दिस इज हाउ, बिकॉज वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो फंडामेंटल है. आपने यूक्रेन रशिया वॉर की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन आपने यूक्रेन और रशिया का मैप नहीं देखा, यू आर गुड फॉर नथिंग. So this is how we here at LUKMAAN IAS, we all the people out here, basic हमारा जो motive है वो ये है, that we want that you should be well versed in this. Once you are well versed in this, there are 46 NCERT books if you'll take all the subjects. I know. Okay, Jeevan Jyoti, I'll come to you. अमित, कैन आई हैव माउस? जो स्क्रॉल करना है उसको ऊपर, या चैट बॉक्स को ना साइड में ओपन कर दो पूरा, वो बहुत बड़ा है. हाँ, उसको मैक्सिमाइज कर दो ना. ओके. हाँ, उसको वो कमेंट को ऊपर. हाँ, बस. ओके, थैंक यू. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन इट. आपको सब मैं 8-10 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, बल्कि कहते जा रहा हूँ कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो. नहीं पढ़ते. आई नो, आफ्टर गोइंग आउट फ्रॉम हियर, सर एनसीईआरटी नहीं. फॉर हिस्ट्री वी हैव थिंक स्पेक्ट्रम. यू रीड स्पेक्ट्रम 10 times, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट, इफ यू विल नॉट रीड एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम का कोई फ़ायदा नहीं. व्हाट यू हैव टू डू, सी, अब तक कॉलेज में बीबीए किया, बीए करा. व्हाट, आई एम सॉरी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. बैठे रहो. केरला. ओके. व्हाई यू वांट टू बी इन यूपीएससी? चाइल्डहुड ड्रीम था, मूवी देख के आईपीएस बनने का दिल करा. कुछ भी हो सकता है यार. नहीं, अभी आई वाज इन बैंगलोर a few months, last month in March I was in Bangalore just before Holi, and there I found that people are in South are very much movies play a very huge part in the daily life, and what we want to become in our life depends on the last movie that we have watched. हाँ, ये सच्चाई है. Whatever you want to become in life, the last movie you have watched, you want to become this, है ना. So it can be anything, see. So it's a dream to be in. Okay, in the meanwhile, Prasanna has sent that 10th class in a government school. Child marriages, have any power? Now I need the power. Great, Prasanna. Great. Child marriages, even I have seen. बड़ा खतरनाक होता है ये. Good. You must need to have a motive. Everyone, you have that motive. वो Amazon वाले कहते हैं ना, Amazon पे, you have it but you never knew it. So same thing, you have that motive. Everyone has that motive to get something. वो वहाँ तक कई बार आइडेंटिफाई नहीं हो पाता. ठीक है. And the problem with this is the whole
metaverse, we can say now just not the universe, but the whole metaverse, which is on YouTube, Facebook, everywhere. You are being flooded with info which is on. हाँ, नॉट सोशल एवरीवेयर, मतलब हर जगह आपको यूपीएससी से रिलेटेड एन नंबर ऑफ चीज़ें मिल रही हैं. कुछ ठीक हैं, 90% ऑफ देम इज रबिश. So don't fall in that trap, because if you're here, if you're not here, you're at any classroom. This is the only and the best way to interact. Even if you're like watching online, we are in direct interaction though through virtual medium. You can discuss with me ना. सर नहीं समझ में आ रहा, बताओ फिर से. YouTube पे बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा, क्या करोगे? ज़्यादा रिवाइंड कर लोगे, प्लेबैक कर लोगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा. So there things are, and actually no one is talking about this. No one is talking about this. I have seen people are like कि ठीक है बता दिया, पूरी कहानी हिस्ट्री की बता दी. I'll take history first. So your GS history, we have 5 parts in it. We have ancient, medieval, modern, post-independence, and world history. Fine. Now, very interestingly, this 3, ancient, medieval, modern, this is the part of your PT. ठीक है. Excluding, I have not included art and culture in this. Mustafa sir will be taking art and culture, so he will tell you about how to integrate art and culture. That is why first we go for history. We have everything planned. मतलब जो हमने schedule दिया, it is all planned in such a manner that you are not at any point. Like first I taught history and then sir came, and I think then it was very easy and quick for you to catch the things. है ना? If you would have done art and culture earlier, सब ऊपर से निकल जाता. And these 3, which one? Modern, post-independence, and world. This is a part of your mains. In mains, approximately 6 questions you will get in history, out of which 3 questions will be your 10 marker, and I think 3 questions will be 15 markers. Fine. यही तो आ रहा है ना? यही पैटर्न है. You will get 6 questions in history, out of which, including art and culture. So possibly we are going to get 5 questions. The issue is that how to tackle all this. अब medieval जैसे medieval है, medieval का part is if you have a good day and you have read medieval, so you'll get 2-3 questions in PT. If you have a good day, if not, वो भी नहीं आएगा. Major focus is on ancient, that too with a blend of art and culture. ठीक है. Secondly, if you will see modern history में भी prelims का बहुत सारा focus जो है वो 1857 के बाद है. 1857 से पहले जो ब्रिटिश है उसके ऊपर थोड़ा बहुत है, लेकिन mostly what you will see it is coming from post 1857 part. Mostly, I am not saying completely, but mostly it is coming from that part. Post independence and world history मेंस में आएगा. ठीक है, दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन भी आ गए तो you have done a great job. So we have I'll be teaching accordingly. My main emphasis will be here and here. ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाना, सब पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ बताई जाएगी, but major focus will be on ancient and modern history because this is where you will get questions a lot. Which is the most difficult part of the exam, whole process? Prelims. Why prelims is difficult and prelims is the toughest part? How many questions are there in preliminary examination? Please come in. It's fine. Please come in. How many questions are there coming in prelims? 100? How many students are appearing in prelims? How many students are appearing in prelims? 1 million. अरे this time it will be 1 million. अरे बेरोजगारी बढ़ रही है, कहीं तो जाएगी. रजिस्ट्रेशन ना करते हैं लोग. अरे करने दो ना, कहाँ जा रहा है? हम तो 1 मिलियन मानते हैं. कितने फॉर्म भरा रहे हैं? चलो तो बोलोगे ना 1 मिलियन. ठीक है, 10 लाख लोगों की भविष्य किस पे तय हो रहा है? 100 क्वेश्चन पे. दिस इज टफ.
This is the biggest hurdle. And this is not an exam. जो ये सोच रहा है ना ये एग्जाम है, वो पागलपन कर रहा है. ये एग्जाम है ही नहीं. This is a psychological war. There's a person who's sitting somewhere in Dholpur house, है ना? And he is preparing 100 questions, let's say. Obviously, one person does not prepare. There's a whole team of experts who prepare the question. Let's say there's a team who's sitting in Dholpur house with a purpose to fail you. They are not preparing these 100 questions. They are not preparing these 100 questions so that you can qualify. They are preparing these 100 questions so that you can fail. You have to fail. This is what they want. यही तो कर रहे हैं वो आपके यहाँ से खेल रहे हैं, आप यहाँ का यूज ही नहीं कर पाते. Are they interested in how much you know modern history? If they would have wanted, it's okay. Be at ease, comfortable, then I'll come to you. If those who are prepared, if UPSC को अगर ये चाहिए होता कि पढ़े लिखे लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा काबिल लोग चाहिए, तो they would have said that only 5% of the top 5% of the universities can come and give exam. What is the eligibility criteria? 21 years plus graduation. Graduate from any university. That's it. 40% से graduate हो चलेगा, 45% से graduate हो चलेगा. यहाँ निकाल के दिखाओ. They're least interested in how much you know. It is just one of the parameters to check how much you understand. Anyone having, like I do somewhat of gardening, क्योंकि मेरी वाइफ ने जो है ना ढेर सारे गमले तो लगा दिए, ख्याल मुझे रखना पड़ता है. तो it happens that when you water the plant or when you give nutrients to it, वो immediately फौरन पौधा निकला और फल निकला और हो जाता है क्या? It takes time. This is where whatever we will be giving you, like I'll be taking a lot of time in modern history. बोर हो जाओगे, बोलोगे सर कब खत्म होगा? But I'll be watering you, and you will see the results. You will see the results in like some duration. 3 महीने 4 महीने बाद समझ में आएगा जब आप उसे absorb करना सीख जाओगे. जब आप उसे absorb करना सीख जाओगे ना, तब आपको realize होगा कि yes, here we have done something. But problem is that we are not someone who are actually habitual of absorbing whatever is being taught. हमें तो लगता है क्लास में जो पढ़ा है उसको रटेंगे, एग्जाम में लिखेंगे. कितना लिखते थे 10 नंबर के लिए? बीए में 20 नंबर का सवाल है तो कितना लिखते थे? सोशियोलॉजी वगैरह वाले तो और ज़्यादा, 10 पेज तो 10 नंबर पे 5 पेज. हमारा तो हिसाब था 2 नंबर पे 1 पेज लिखना होता है. 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 5 पेज लिखते थे, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 10 पेज. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू. एम आई राइट? वो समवट हिंदी चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा, ठीक है, इट्स ओके. तो बोल दो, मतलब इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मी इन हिंदी, इट्स ओके. हियर how much you have to write for a 10 marker? Sir, actually I have done engineering, so नहीं, in UPSC how much you have to write for a 10 marker? 150 words. 1 page means Maximum 1.5 page. 1.5. Maximum 1.5 page. That is why NCERT is important. Now see, this is the width of your spectrum. Bulk. This is the width of your NCERT. Same thing, na? Same story. Spectrum and modern history of Bipin Chandra. ये bulky काम नहीं करना है, वो quality काम करना है. Because when you are going to write in mains, it should be your best 150 words. You must understand that how to squeeze out the nectar out of that. That how part is very difficult. That is why we are here. That is what. See, UPSC coaching is not about what to do. The coaching is about what not to do. And most of the times, like you have, like, those who have studied from me earlier, most of the time I'm telling the people what not to do. Don't do this. In economy, I have taught, and in economy, I think just 20 days were there. Na? When we started last year, I think 20-25 days it was prelims after we started economy.
10-20 days. And how many questions came from our classroom program? 5 to 6 just in the first 20 days. I was not we have not completed the economy by the time last year prelims happened. We were in between of economy, and they were able to solve 6 questions. I think 11 questions were there in economy last year. 11 or 12 questions were there in economy last year, and just in 20 days they were able to solve 6 questions sitting here. और मैं बड़ी चीजें नहीं पढ़ाता. I never teach huge, like in BBA you must have read about, no? I was also done MBA, that's why I know. In BBA you must have read about that those use business economics or production economics and huge things. And there are people outside who are actually teaching this. You just go in those huge photocopy shops and those who are having that yellow pages books, and you'll find that, okay, never ever do that. For example, let's say in economy there is a topic called MSP. तुम्हारे यहाँ तो अच्छा खासा खेती किसानी है घर पे? हाँ. क्या होता है? MSP क्या होता है? Minimum support price. Now this is a topic, and I can create a question from polity, I can create a question from history, I can create a question from economy, I can create a question anywhere you want from this one topic. Now this MSP, minimum support price, everyone is aware of that. You know those big things, the big yellow pages being sold outside on the Bada Bazaar road. They are talking about, this is the A2 plus FL formula, this is C2 plus this is the formula, this is what they are including, this is what they are excluding, this is what they are talking about. What UPSC asked? UPSC asked twice the question on MSP till date. One question was on who recommends this MSP, and you know what was one question? They gave a list of 8 crops, out of which you have to answer on which crops MSP is being declared by the government. You keep on याद करते रहो, बैठ के रटते रहो, that formula, everything, वो नहीं आएगा. If you don't know what are the crops on which government releases MSP, you're crapping up that all that big formula and big methods is useless. You are in economy, people have this another subject that I'll take. I think in September we'll start economy as per the schedule that I've been given. There, I have divided the whole economy into 16 chapters, and basically there are only 5 topics. If you will see question from past 15 years which are coming now, economy is something where the question is integrated with current affairs. In economy, the questions are not direct. 40% questions बिल्कुल fundamental static part से आता है. 60% question जो economy का आ रहा है, it is coming an integrated way of, one is your static part and that is being integrated with any of the current event. Okay, and if you will analyze the questions from past 15 years, 80% of the questions which are being asked in economy are from 5 topics. National income and aggregates, your GDP, GNP and all this. Fiscal policy, money and banking, balance of payment and exchange rate, and government schemes. 80% questions are coming from just 5 topics. And if you are well versed in the fundamentals of, if I will tell you like monetary policy, I am not interested what governor is saying right now, but I am interested in, you should know that what is monetary policy, what is CRR, whether calculated on net time or demand liability or calculated on total time and demand liability, how the RBI is going to, how the bank updates, in how many days they have to update. This is fundamental part. Whether they get any interest on CRR, whether they get any interest on SLR, something, whatever. This is where we have to work on. Because if this part is good, you will be able to solve how much? 80% of the questions. 20% तो वैसे भी नहीं करना है. करना है? नहीं करना है. You have to leave 20%. Any one of you who have interest in cricket? हाँ, खेला है. थोड़ा बहुत खेला है. Test match. You watch test match.
The toughest form of cricket is test match. A good batsman is not the one who knows which ball to play. A good batsman is one who knows which ball to leave in test match, because that's a game of patience. So is this. UPSC is very smart. Why I am saying that this is a psychological war? The two toughest paper in the whole examination, two toughest paper. And they are not tough because of their syllabus, they are tough because of their positioning. One is your CSAT, another is your ethics. Because both of the papers, ethics and CSAT, requires huge mental involvement. It's not based on your knowledge, it is based on your analytical power. Now imagine, you have given your prelims, like you are going to give this year, na? 5th June, temperature is 40 or 40 plus, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 40 plus temperature है, 11 बजे से 11 बजे तक आपने अपना मेंस आपने अपना वो दे दिया है, GS का पेपर दे दिया है, दिमाग में 1 करोड़ चीज़ें चल रही हैं, यार लाइक पॉलिटी का आंसर क्या होगा, this, and then at center you will meet someone who is extra intelligent and he is or she is like, अरे ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, doing like that, and you are getting under huge psychological pressure, और बच जाते हैं दो. This is CSAT. Garmi is at its peak. Your center is in a sarkari school, which may or may not have a fan. Even if it is having a fan, possibly there will be no electricity. Am I right? Possibly you will not get cold water. Phones आपके जा चुके हैं, so you cannot interact with someone who could give you a booster. And then when you start writing your CSAT paper, it requires mental ability, na? It requires your mental presence. What is happening? पॉलिटिक का वो वाला क्वेश्चन, उसका जवाब क्या होगा? दिमाग में पॉलिटी चल रही है, दिमाग में हिस्ट्री चल रही है, सामने सीसैट का पेपर रखा हुआ है, डेलिबरेटली रखा है वो. Ethics का पेपर, GS4, they could have placed it at GS1 also. Why 4? Give your language paper, give your essay paper, give your GS1, give your GS2, give your GS3, and when you are exhausted, अब बताओ क्या सोचते हो? This is a psychological war. This is not an exam. Understand? और जब तक आप इसको एग्जाम समझोगे ना, नहीं होगा यार. जंग. अनिल कपूर ने क्या कहा? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. इसको जंग समझना पड़ेगा. And more you will sweat in peace, less you will bleed in war. More you will work hard here. More you will put pressure. Like someone a few days back, I was taking class at Jamia Hamdard Study Circle. They said, sir, what to do? CSAT is our biggest problem. I said, do nothing. Grab 100 papers. 100 days were left when I was taking class out there. I said, grab 100 papers. Don't give an exam in an AC room. Go to your room, switch off your fan. Start from 2:30. Put yourself in those conditions. ये भी होता है, ये भी इफेक्ट करता है. ऑल ऑफ अ सडन आपने तो साल भर प्रैक्टिस किया, कहाँ? एसी रूम में बैठ के स्टडी हॉल में. वहां गए गर्मी में परेशान, क्या करोगे? प्रैक्टिस पेपर दे दो, फैन भी बंद कर दो, लगने दो गर्मी. This is preparation. Preparation is about how you will live those 2 hours of PT and how you will live those 2 hours of your CSAT, because that is the toughest part. And if you are in war, you need weapons, and you need good and sharp weapons. War is always not about attacking. War is about defense also. You should know when to hide. You should know what are those 20-25 odd questions that you are going to leave. That understanding मेरे साथ रहते रहते तो आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. अब तो समझ में आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. The day you will start understanding this, that which question is to be left alone. Obviously, you are not going to attempt 100 questions. This is for sure, ना? Negative marking है. 100 क्वेश्चन नहीं करना है, पहली चीज़ है. 70, 75, 80 मार्क्स है. 80 भी रिस्की हो जाता है. 70, 75 odd questions are good. You should know what are those 25, 30 odd questions which you have to leave.
I think you have done engineering. The biggest problem with engineers in this exam, you are also an engineer, na? Engineer and MBA. also. MBI. That when you get a question on maths and DI in CSAT, you start, हमसे कैसे नहीं होगा? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बता रहा हूँ. It happens. क्रिकेट खेलते हैं, पिछली बार 2 क्वेश्चन आ गए क्रिकेट पे. जनता ने बाहर ना मतलब लाइन लगा दी है कि हम वी विल गो फॉर करंट अफेयर्स ऑफ क्रिकेट. अरे नहीं पढ़ना है, वो ट्रैप है, पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो. पिछले 15 साल में नहीं पूछा, अगले 15 साल और नहीं पूछेंगे. वो गेम खेल रहे हैं यार, वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है. दे प्लेइंग विथ योर साइकी, you don't even realize. This is not about hard work or smart work, no. This is just about understanding that right point where you have to hit. Simple. I never gave any single option whenever I teach history or economy. Like when I ask questions, I never give options. Why? Option के साथ कर लिया तो यहाँ क्या फायदा है? If you are correct without giving an option to you, वहाँ उसको उस ऑप्शन को जो उन्होंने क्रिएट क्यों किया है, so that you are confused. The options, which are the 4 options that you will get in your preliminary examination, is not there to help you out. It is there to confuse you. हटा दो उसको, वहीं देखना, यहाँ रहने दो. Because if you know that Akbar II sent Raja Ram Mohan Roy to England to discuss his pension, Akbar II कभी नहीं भूलोगे. But if you will solve the question, who sent Raja Ram Mohan Roy to England, now there are 4 options and then you are analyzing this. ये होगा ये, अरे नहीं, करना ही नहीं, उतना दिमाग नहीं चलाना है. So when you are well versed in this true and false, when you are well versed, जो हम अब देखो NCERT पढ़ रहे हैं ना, we are going with NCERT class 6th 7th. What was the nature of questions? True or false, fill in the blanks, match the following. 3 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, तब तो मल्टीपल चॉइस नहीं आता था. आपने अगर वो प्रैक्टिस करना सीख लिया, फिर ये ऑप्शन के साथ तो फिर खेल रहे होगे. Most of the time students when they take for test series, when they go for analyzing themselves, self evaluation, they okay, and most of the times your question is either right or wrong because of an option, because of a wrong option. And I'll tell you one thing. Let's say there's a question, correct answer is A, and you will ask majority of the students who have committed wrong, let's say they have marked option B. 90% of the students mark the same incorrect option. होता है ऐसा? बाहर बात करोगे, उसने भी लगा दिया, उसने भी लगा दिया, सबने भी लगा दिया. क्यों? क्योंकि उस ऑप्शन को डेलिबरेटली रखा गया था वहाँ पे कि तुम इस पे लगाओ. Because there is someone who is ready to fail you out. So my approach of teaching, so we'll be starting with ancient history. We'll be starting with modern history. Whenever I'll start with modern history. The reason is because the day when I'll tell you Indus Valley civilization, people will sleep out. And my way of teaching history is very different. You will understand something. I think hardly there are 50 odd dates that I have told. It is not about, history is not about dates. First misconception, that history is about dates. No. Why we read history? To know how our society forms, हमारे cultures कैसे evolve की, इस बारे में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई सारी. ठीक है, अच्छी बात है. मतलब आज का हिंदुस्तान कैसे बना, क्या मिल जाएगा उनको ये जान के. Why they are interested? सर क्योंकि हम सोसाइटी में हमें वर्क करना है, तो सोसाइटी में जो जितने भी कास्ट सिस्टम बैठे हुए हैं, फोन वन से हमें समझना तो होगा ये हमारे इंग्रेट कर गए हैं, इन्हीं से हमें डील करना है, इन्हें समझने में हेल्प करेगा. ठीक है. लोगों से डील करना है. क्या नाम है आपका? राजवीर. कहाँ से हो? गोरखपुर. अरे तुमसे तो आराम से बात करनी पड़ेगी यार. हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ के हो? हैं, मिले हो उनसे? कितनी बार मिले हो? नहीं, क्लास 10 में थे तो आए थे स्पीच देने आए थे. बढ़िया आदमी. नहीं यार बढ़िया आदमी. कम ऑन. हु टोल्ड यू यूपी में क्राइम कम हुआ है?
नहीं ऑनेस्टली दैट्स ट्रू. सर उनकी फिलॉसफी अच्छी है सर. उस वक्त भी अच्छे बात करते थे, चाइना और पाकिस्तान के बारे में बात करते, वो भी हाइट के रिलेटेड बात किए थे. तो उनकी हाइट उतनी है नहीं, फिर भी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अपनी हाइट बढ़ाओ. बिल्कुल सही बात है. अच्छी चीज़ क्या है. नहीं इट्स ओके. कोई पॉलिटिशियन अच्छे नहीं. प्राची भाई और लाफिंग. नहीं ऑनेस्टली अभी मैं मतलब इवन लास्ट नाइट आई वाज इन अलीगढ़, डे बिफोर दैट आई वाज इन भोपाल. अभी आई हैव अ फ्लाइट टू कैच. तो मैं कल रात को मुझे ट्रैवल करना पड़ा एंड इट वाज ऑल सेफ. और जगह जगह पे पुलिस वैन खड़ी है, वो ऑब्जर्व कर. इट्स गुड. क्यों बनना है IAS ऑफिसर तुम्हें? सर मैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना चाहता हूं. अरे पर्सनालिटी तो वो डेथ. मतलब मैं हमेशा ग्रोथ करना चाहता हूं, बेटर चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता हूं बेटर. क्या समझते हो समाज के बारे में? सर उनके नीड और रिक्वायरमेंट्स क्या है? कर सकते हैं. कौन सा समाज? क्या हम कौन सा समाज? ये समाज जहाँ हम बैठे हैं 100% लिटरेट लोग बैठे हैं यहाँ पे. वो आवर होल गैदरिंग, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इज 100% लिटरेसी ना. When you will go out in a society, there is no 100% literacy. This is where you have to understand. This is what you have to show them. मतलब पर्सनालिटी की अच्छी बात की इन्होंने. Your personality should be कि तुम इंटरव्यू में दरवाजा खोल के अंदर घुसो और पैनल को लग जाए बस इसी को लेना, इसी के लिए तुम पैदा हुए थे. See, they are first checking your eligibility, that whether you are eligible to be tested or not in prelims. They are not checking your knowledge. They have least interest in your knowledge. First they are testing what? Whether you are fit to be tested or not. That is what prelims is doing. That's why Bahar. Then in mains what they are testing? In mains they are not testing your knowledge. They are testing your understanding. They are testing your understanding. That how much you understand, like what you said, कि हम कितना समाज को समझते हैं, हम कितना अपनी सराउंडिंग्स को समझते हैं. यूक्रेन रशिया वॉर से हमने क्या समझा? There may be a question on defense corridors. There may be a question on India's defense needs, citing something is happening somewhere else in the world. There can be a question on north-south divide. When it's bound to happen. Okay, that you can get questions like this. Why? They are least interested in what you know. Everyone knows there was a revolt of 1857. Everyone knows. Whosoever is preparing for UPSC knows there was a revolt of 1857. But how you have understood that? What you have opted from that? What you have absorbed from that? They are interested in that. And then, okay, tested. Okay, he has a good or she has a good understanding. Let's check level 3. Whether the understanding was of his or her own, or whether he or she has copy pasted it from somewhere else. Possibility है ना? लिखा है, देखा तो नहीं है. वो देखते हैं. That is why it is your personality test. It is not an interview. It is a personality test, and there you will face immense pressure. This whole exam is about how easily you can tackle pressure. How easily you can tackle that. It's not about यहाँ से जो हम सीखेंगे. Most of the times I'll be praising British. I do that sometimes, but because they had a vision, ना. They had a vision that हमें 200 साल राज करना है. Have you ever realized that pre-independence, we had leaders like Nehru, we had leaders like Gandhi, Ambedkar, Jinnah, obviously he was a part of history, who created something. Maulana Azad, Subhash Bose, Sardar Patel, and they have, and now we don't have such leaders. Why? Post-independence we don't have such leaders. Why? सर उन लोगों ने वो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ जो काम कर मतलब अत्याचार करे, एक्सप्लॉइट करे, तो उन्होंने सहा है और फेस किया उस चीज़ों को और आसपास की सोसाइटी को देखा है. तुमने फेस नहीं किया? Sir, they were facing a common enemy. And that We are also facing a common enemy. Poverty, unemployment, hunger, malnutrition. And it is there since ages, and it will, I don't know, till remain will well. बट ये था कि वो हमारे यहाँ के नहीं है, वो कि कहीं और के हैं ना. कौन? फॉरेनर है और हमारे नहीं,
The problem is that now understanding. Now I'll take you to history, 1835, Macaulay Declaration, which is considered to be the Magna Carta of Indian education system. The education system that British implanted here was an education system which was meant to make slaves. Because they wanted to create a class of Indians who can speak English, who can write English, and who will be loyal to them. They wanted to create a class of loyalists amongst, and there was a section in the society who was hating them. And this is one colonial practice that all of us, even those who are watching us online, all of us have, either we have done it or we have faced it. पहला लेसन, ध्यान इधर, पीछे कुछ हो रहा, बम फट जाए फर्क नहीं पड़ता. Because I'll tell you how. If you're good in English and you start speaking English in school, I'm taking you to the school, बड़े अंग्रेज बन रहे हो. Like, है ना, हुआ है, तुमने किया होगा या बोला होगा या तुमने सुना होगा, दो में से एक चीज हुई है, हुआ है ना. You're trying to be, बड़ा अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा अंग्रेज बनता है. How this came? Because when they created this English speaking and they tried to flaunt their English with the common society, बड़ा अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है. See, this is the colonial impact. So they created an education system which will make slaves. But the common thing, that the education that they were giving back there in Britain, the education that they were giving back there in England, was something which was there to rule. The common thing about all the names that I took just now, they all went there. नेहरू जी वहाँ गए, गांधी वहाँ गए, अंबेडकर वहाँ गए, सब वहाँ गए ना पढ़ने इंग्लैंड में, and they learn how to rule. They learned from them. They implemented it here. The problem with the education system that exists today, now economy में integrate करूँ, NEP 2020, new education policy. The education system that we are having today, there was no Indianization of that after independence. There was no Indianization of the education system. वही चलता रहा, वही matriculation system आया, वही सारी चीज़ें होती रही, वही college, universities, and everywhere वही system चलता रहा जहाँ सिर्फ याद करो, order लो और वापस आओ. No one allowed you to think. No one allowed your thought process to integrate. No one allowed your thought process to fly like a bird. That's why we don't have leaders like that today. What do you think? What they will be teaching you when you'll be going to Missouri? That come out of that shell where you have been taught to be a slave. Labasna के बाहर लिखा है, you are born to rule. They will teach you how to rule. बाहर सीधे लिखा है. हाँ, अंग्रेज लिख के गए थे, हमने नहीं लिखा है. अभी भी है. अभी गया नहीं तो पता नहीं मुझे. जाओगे तो बता देना फ़ोन करके कि सर लिखा है कि नहीं लिखा है. ठीक है, ठीक है. So this is the difference. This is how we will read history. समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? इसी को हम इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर देंगे. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन को तो पढ़ना पड़ेगा ना इकोनॉमी में. इंडियन इकोनॉमी में एजुकेशन को वी हैव टू गो विथ, हैव टू अंडरस्टैंड इंडियन एजुकेशन, एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट एवरीथिंग. The important thing about UPSC is that now UPSC is asking questions which are interdisciplinary. You cannot outrightly categorize, or you cannot categorically say that okay, this is a question from economy or history or polity. There is some element which is coming from other subjects also. So you also have to study in the same way. Likewise in economy, what I have done, I have divided the whole whole stuff into 16 chapters. I'll be starting from very basic thing, and my first thing is what is money. Because if you're starting from economy, you have to understand what is money. If you understand what is the concept of money, you can understand anything in economy. I'll not be teaching you that huge theories or graphs or nothing like that. आता ही नहीं तो पढ़ना क्यों? So once you are well versed in this,
Because you are here for 2 hours, 3 hours, rest 21 hours you are with yourself. But my job is to give you this structure. Now it's your ability that how beautiful building you will create on this structure. अब एक्सप्रेस वे तो बना दिया ना, लखनऊ से कहाँ का बना है अभी, गोरखपुर तक का बना है ना एक्सप्रेस वे. अब सरकार का काम है एक्सप्रेस वे बनाना. अब ये आपकी एबिलिटी कि आप उस पर कितना सेफ और स्मूथ ड्राइव करते हो, आप उस डिस्टेंस को कैसे कवर करते हो. So we will be covering this part. I'll be starting first. I think we are having history first, no? History schedule first. So I'll be starting from modern history. Then I'll be going back to ancient history. Then medieval, and then at the end, 10 classes, 12 classes में हम खत्म कर देंगे. इतना I will give you. But least about, it's not about notes. It's not about what to say. मतलब dictation ज़्यादा. I'll be telling you a story where you will understand the things. Like this. अभी हमने education system को discuss किया. What is अब English? तो English बुरी हो गई? नहीं. What is the biggest contribution of English in national movement? Integration of English. How? North, South, can interact with each other with English. We have example. हाँ. But how that helped in national movement? How they have to mention English. Sir, through English, the ideas of one area went to the Great. other area. Great. Was it? Yes. So before English education or before this universities, like after 1850s, we saw emergence of universities in India. Before that, what was happening? There was a small ideology which was cultivating in Punjab. There was something happening in Bengal, something happening in Maharashtra. But what Punjab is doing, Maharashtra was not aware of. What Maharashtra is doing, Bengal was not aware of. This strategy of introducing English education actually backfired. Their idea was to create a loyalist class amongst us. But what it ultimately did, it actually united us all. Now, through English, we can actually communicate with each other. This is how you have to understand the syllabus, every subject. In economy, more focus will be on telling you fundamentals because most of you have not read economy at any stage. Mostly economics comes after class 10th. Till 10th, we are least interested in social sciences. After 10th, either you have opted for PCB, PCM. Only those commerce students are there, who have read some economy, or humanities students. Rest, they have not read economics. So I'll be teaching you economics from the very basic. My way to teach is to teach you from a very fundamental point. What is money? What is economy? And again, I'm repeating, we are not going to study economics, which is a theoretical part. We are going to study Indian economy, which is the application part. There's a difference between both. Economics तो subject हो गया, वो graduation, post graduation में पढ़ाते हैं. We are going to study economy, means how that जो समाज की बात कर रहे थे ना, तो उसके समाज के आर्थिक part को हम we'll be studying the economic, not the economics. Fine. You have any doubt, any question? Anyone having any doubt, any question? कोई नहीं. So basic source for history and economy that we have to refer to. NCERT. Only NCERT. 9 to 12. For history, you can, if you have studied history earlier, if you are okay with history, you can refer to class from class 6th. Means you can refer it class 11, 12th onwards. If you have no idea about history, then start from class 6th. Depends, and no one can analyze and evaluate you better than you. So if you feel that, okay, I'm knowing who was Akbar, who was Jahangir, ठीक है, class 11 से उठा सकते हो, not a problem, 10th की भी ले सकते हो, not a problem. But if you are बिल्कुल zero, then take class 6th. Economy, I'll say that give some time, wait till the class starts. Don't jump into economy, because if you have not read economy earlier, it would be very difficult for you to understand the things. Okay, we'll be starting, chapter number 1 will be national income and aggregates, then we'll be talking about money, then monetary policy, banking, fiscal policy, government budgeting. Now, government budgeting is something which you will see in polity as well. Government budgeting is something because that's a part of the
the legislative control over the executive. So I'll just be giving you a brief introduction. Okay, these articles are important. These articles are related to GST, but my more focus will be on what is GST and how that is putting an impact on our system. Okay, so basically what we are going to study, first we'll be studying fundamental part, and then we'll seeing that how that, especially in economy, that how you can relate it to current affairs. Whatever current affairs or current events would be going on, we will be referring to you accordingly. Then we have weekly current affairs classes. No? We have weekly current affair classes. There you can integrate that. So if you have read monetary policy, for example, and now like there was an unprecedented updation in the monetary policy. That was not scheduled. Then RBI governor and everything, and it was done after I think how much 40-45 odd months. No? After a very long time, there was an updation in the policy rate. So now you can integrate that. Now you can understand that why, if the policy rate is up, why share market is down. Because now banks would be offering more rate of interest on savings. So when the rate of savings goes up, rate of investment comes down. That's why share market falls. वही हुआ ना जिस दिन the time when RBI governor was announcing the monetary policy, at the same time share market was coming down, stock exchange. So we'll be dealing that also, that how savings and investment are to be done. Then we will be talking about money and banking, the whole banking system, starting from RBI and reaching to the Grameen Bank, regional rural bank, every stage, what happens, what are the, even your small payment banks, your small finance banks, payment banks, all the new banks, NBFCs, everything, what are the norms, everything related to that. But fundamental part, focusing on fundamental. If you are done with that, then it would be very easy for you to update your current affairs. Reason, we can study economy for how much? 20-30 odd days. But economy is very dynamic, that every day it is updating itself. So when you are updating your current affairs, I cannot do that. I cannot come here every day. Neither you can come here every day for one subject. My job will be to tell you, okay, this is your economy. My task is, when you read a current event, when you read a news item which is related to economy, no terminology should be alien to you. Which is actually right now, apart from if you have not studied economy earlier at your school or college level, it is definitely, every word seems alien. होता था ना जब आपने तो खैर किया है, anyone who is not from an economics background, लगता है ना कि पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये क्या रेपो रेट है, क्या है कहानी इसकी. I'm sorry, your good name? Okay, you're from? Delhi. What you have done in graduation? Okay. BCom. From? Which college? Vivekanand College. Good. So this is how my strategy will be. My strategy will be to make you so much well versed in history, GS history. I am not here to make you a historian. I will not be here to make you an economist. I have no interest that whether you remember economics after clearing your exam or not. I am least interested in that. I have only one single agenda: clear the exam. हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, एग्जाम क्लियर करना, और कुछ रखना भी नहीं है. फोकस. Sometimes what happens when students start studying ना, apart from optionals, leave optionals, I'm talking about GS, they get so much indulged in history कि सर वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, और फिर पूछो कि अकबर का एम्पायर जो है वो जहांगीर औरंगज़ेब से आधा था, लेकिन तब भी अकबर महान है, क्यों है? ज़ीरो. इंटरेस्टिंग, अकबर और औरंगज़ेब को सबको पता है. एंड औरंगज़ेब्स एम्पायर वाज फ्रॉम मदुरई टू काबुल. This is the contribution of Aurangzeb, that he integrated a huge part of this country. But then also, when it comes to rating them, Akbar is at the top. Why? This is a question to answer. तो क्या था वो? एक पॉलिसी तो औरंगजेब की भी थी ना, लेकिन जब एक देखो, जब तक industrial revolution had not occurred, we were studying upon industrial revolution in world history. Till then, the symbol of prosperity in the world, or rather till 1945,
Second World War ended, or 24th October 1945 to be very precise. The symbol of prosperity in the world was land. अलेक्जेंडर से लेके हिटलर तक हर कोई अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था. Because land was the symbol of prosperity, means how much area of earth you govern, that tells how big you are. But in 1945, when United Nations was formed, everything ceased to exist. Borders became constant. Now what is the symbol of prosperity? Economy. Which is a stronger country, Japan or Russia? Japan. And if you'll compare the size of Japan and Russia, Japan stands nowhere. Even India stands nowhere when it comes to comparing it with Russia. Rather, Japan stands nowhere when it comes to comparing land with India. So now, in modern world, it is not about how much land you govern. It's about how much economy, how strong your economy is. That is why at that point of time, major expenditure was done on military. Because to grab or to conquer huge empires, you need huge armies. MSP we are talking about. If I have to ask a question on MSP, then I'll go to Alauddin Khilji and ask about the agrarian reforms brought by him. This is how UPSC will do. This is how you read MSP on economy, they will ask a question of MSP in history. He was the first one. You have to go, you can, it's okay, you're free to do, not an issue. Most welcome. So this is how I'll be, and we all as a team, through test series, through questions. Some question regarding Alauddin Khilji's market reform. उसके बाद कुछ अच्छा चीज बोलने वाले थे तो तक डिस्टर्ब कर नहीं वो डिस्टर्ब नहीं करती वो, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ वो मिस कर गया, मेरे साथ हो जाता है ऐसे. You're talking about, we used to talk about what MSP, or you are talking about what MSP as a formula, and they will ask a question on who was Shahnai Mandi, or who was Shahnai Mandi related to, or whose reign it was related to. Now, this is how you have to integrate. That is why we have a short team of faculty who can actually integrate these things. If you cannot just read geography, you cannot just read economy, you can't just read as in compartments. You have to integrate, because this is what UPSC is doing, that they are asking interdisciplinary questions. So if they are asking such questions, then we also have to work accordingly, no? Got the point? So this will be my strategy. In history, I'll be starting from modern history. Then I'll go to ancient and medieval. That's my job, to how to connect this. That's my responsibility. Don't worry. That how to connect this ancient with, wherever I will leave, wherever I'll be starting modern, I'll be connecting, I'll be ending medieval out there. That's my responsibility. कौन पहले आया था, मुगल की यूरोपियन? गलत जवाब. Europeans came to this country before the Mughals. वास्को डी गामा कब आए थे? 1498. बाबर कब आया था? You know the answers, but this is how you have to articulate the information. It's not about having information. तुम्हें पता था ना वास्को डी गामा 1498 में आए थे. तुम्हें पता था ना बाबर 1526 में लड़ने आया था. 1520 से तैयारी कर रहा था, वो पहले से कोशिश कर रहा था. मगर आप सोचो, सर ये तो पता ही, ये सामने था, कभी देखा ही नहीं. This is what I am going to do. That's why the question you are asking, sir, how, that is the answer. How, I'll tell you. I'll tell you what are those questions to leave. What is that, I that you should have. मजा आएगा हिस्ट्री में. I think 20 जून से. There's one question. Yes, please. Yes, Shaista, please. Yes, sir. Sir, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, क्योंकि बहुत सारे पेज होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या
कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो पहले तो ये बताओ। Sir, Indian Express. वेरी गुड। द हिंदू तो को नहीं पढ़ रहा। मैं तो सोचता हूँ, मॉर्निंग में मैं तो पढ़ता हूँ भाई। मॉर्निंग में सेशन चलता था हिंदी का 10 to 11। उतना काफ़ी है, पढ़ो मत, पढ़ो मत उसे। सर तो क्लास हम लोग ही कराते हैं ना। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ उसे मत पढ़ो। क्यों सर? तो मतलब डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस बताऊँ? डिफरेंस ये है कि द हिंदू इज़ वेरी मच क्रिटिकल। लाइक सर उसे कवर करते हैं तो हम ओवर क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। यू आर गोइंग टू बी इन गवर्नमेंट जॉब and when you will read a newspaper which is over criticizing the government on your idea will become like that. And when you have to write an answer in mains, which is how much time you have, like 6-7 minutes, at that time you cannot create an answer. Whatever you think, it will come automatically. That is why when I'll teach economy, after teaching economy I'll say read the economic survey from one page end to end. Because throughout the year what you have done, you have read the newspapers, you have read the magazines and everything which are criticizing the government. Economic survey is something which is telling about the policies of the government from the policy makers eye. वो भी तो पता होना जरूरी है ना, अल्टीमेटली तो पॉलिसी मेकर बनना है ना। तो ओवर क्रिटिसाइज वाली चीज़ें मत पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस इज गुड, इट इज़ अ बैलेंस न्यूज़पेपर, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप लोग अगर पढ़ रहे हो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल नो नीड टू बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल न्यूज़। ओके, फर्स्ट strike out all the political news least interested. Try not to have a political ideology. कौन अच्छा है बताओ? राहुल गांधी अच्छा है, मोदी जी अच्छे हैं? सर मतलब ही नहीं है। अरे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें ये बताओ। काम क्या किया? तुम बताओ तुम्हें कौन अच्छा लगता है? कोई अच्छा नहीं लगता। और जब तुम IAS बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो छोड़ दोगे कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है तो नौकरी छोड़ देंगे? उस वक्त हमारी स्टैंडर्ड कुछ अलग रहेगी। नहीं, उस वक्त भी यही रहेगी। दिस इज रियलिटी। यू हेट अ पॉलिटिशियन, यू लाइक अ पॉलिटिशियन, लाइक in from Kerala. In Kerala there is nothing like BJP or something like that. And when you will join central service, let's say there's a government of BJP or you got UP cadre, so what will you do? Will you leave? क्या अलग कुछ नहीं, उस वक्त सिर्फ नौकरी प्यारी, घर वाले मारेंगे जूता। बस तुम्हें भेजे थे हम सरकारी नौकरी लेने के लिए, तुम बड़े जो है वो बन रहे हो आदर्शवादी, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए इफ दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर फ्यूचर, व्हाई टू हैव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? योर ओनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स इट, सिंपल। सो स्ट्राइक आउट ऑल द पॉलिटिकल न्यूज। बहुत सारा बच गया। स्ट्राइक आउट ऑल दोज न्यूज़ जो वो नाले में भैंस गिर गई, 2 घंटा ट्रैफिक जैम, उस टाइप की जो न्यूज़ होती है ना, स्ट्राइक आउट ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट पार्लियामेंट इज सेइंग, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, वी आर इंटरेस्टेड व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। Policies of the government means new schemes, new train routes, anything which is coming up. We are interested in what international organization, how they are having relations with us. We are interested in economy news, how world economy is working, how that is affecting India, and how Indian economy is like all those reports, ease of doing business, happiness index, all these kind of news, and the commentary over that which is coming on the editorial page. But the important thing about editorial page that all of you have to understand, that opinion which is huge, first editorial is like half a page, there are 4-5 articles, that is an opinion of someone else. Your job should start after the full stop of the journalist. Now you think upon that, like you have read the newspaper, then what you do next? आप पॉलिटी उठा लेते, नहीं, sit down, relax, and then think about that. More and more you will put your nerves and nervous system at work, more efficient you will become. They are not interested that how well you can articulate the opinion of a journalist. They are interested in how well you can think, because it's you who are going to be the policy maker in the future. So your opinion matters. So when you are reading, the purpose of newspaper is only, there are only 3 things which we want to, the outcome of newspaper. First, obviously you should be well informed what's going around you. You should have an understanding.
Before that, you should have good content, good selection of words, good vocab, which is required when you're writing mains, because वहाँ सोचने का time नहीं है. So when you're continuously reading newspapers and other articles, योजना पढ़ रहे हो और भी जो भी पढ़ रहे हो, उसका फ़ायदा ये कि आपके पास कंटेंट अच्छा आ जाता है, आपके पास अच्छे वर्ड्स आ जाते हैं, आपके पास सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाती है, आप you learn that. Third thing is you start to generate an opinion. We don't have an opinion right now when at the beginning, but definitely you will have an opinion by the end of the course, and that is what will be reflected in your. So the purpose of newspaper is not well informed तो आप कहीं से भी हो सकते हो ना, well informed तो आप Facebook से भी हो सकते हो, well informed तो आप Twitter से भी हो सकते हो, मिल रहा है ना सब वहाँ भी. लेकिन यहाँ ओपिनियन की बात है, यहाँ कंटेंट की बात है, यहाँ वोकैब की बात है. Got the point? So रीडिंग न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल न्यूज़ मत पढ़ो, क्योंकि जब पॉलिटिकल एलिजेंस रखना ही नहीं है, मान लो तुम किसी से बहुत ज़्यादा अच्छे, तुम बोले अरे ये तो बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम इनकी वजह से हम जाएंगे, दिस विल बी द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. अब बताओ, तुम जब गोरखपुर के हो, तुम जब तक IAS बने, यूपी कार्डर मिला, अखिलेश की सरकार आ गई तो क्या करोगे? वो तो बोलेगा अच्छा गोरखपुर के हो, हैं? फिर क्या करोगे? इसलिए नेवर एवर हैव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि वो आपको ना, I have seen many cases in interview, I have seen many cases in mains and essay especially, when they start to write and when they start to speak, वो प्रेशर है ना, वहाँ तो बनावटी नहीं बन सकते ना, तो वहाँ तो नेचुरल निकल के आता है, और वो फिर ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, they used to speak out such things which are not at all leave appreciated, they are not at all required. Many of the times you must be knowing, आप देखा होगा, you must know the other seniors, the bhaiyas who are and they are preparing for 4 years or 5 years or 6 years, है क्या गलती कर रहे हैं? कभी वो सोचा है? 5 year प्लान लेके तो नहीं आए हो ना यहाँ पे, पक्की बात है, उनकी गलती सिर्फ यहाँ पे. Yes, please. सर अगर खुद से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे अप्रोच करें हम, जैसे आप हिस्ट्री और पढ़ने की बात करें, कैसे अप्रोच करें? More, yes. First of all, stick on to fundamentals. Start if you have no idea about history, you can start from class 6 NCERT. You can work on that. And second, important thing is you should define your resources. For example, history के लिए मैं 10 किताबें बता सकता हूँ आपको, मैंने अब तक सिर्फ एक ही बताई है, दूसरी तो आप लोगों ने सर स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ते हैं, मैंने कभी प्रिस्क्राइब नहीं की किसी को. If you have time to read spectrum, that bulky book, read NCERT thrice year, guaranteed ज़्यादा नंबर आएंगे. सर कैसे पढ़े स्पेक्ट्रम से, क्योंकि बड़ी किताब होती है, कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, जब पढ़े तो मतलब शॉर्ट खुद ही बनाए या खुद ही करें, क्योंकि सब याद नहीं रहता है. तो याद तो करना ही नहीं है सर, अगर हम समझ भी लेते हैं तो फिर जब खुद से हम कुछ लिखने की बात करें, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं खुद से लिखने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, तो याद नहीं आता है, अगर पढ़ते समय समझ आ भी गया, क्योंकि आप देखो शाइस्ता, आप उसको याद करने के मकसद से पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा. द की टू सक्सेस इज रिविजन. द की टू सक्सेस इज रिविजन. एक बार अब क्या होगा, हिस्ट्री पढ़ लोगे, ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ते 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 आप हिस्ट्री ख़त्म की, फिर आपने पॉलिटी पढ़ी, फिर इकोनॉमी पढ़ी, फिर ज्योग्राफी पढ़ी, फिर करंट अफेयर पढ़ा, पता चला तब तक हिस्ट्री वाइप आउट हो गई. So every 10, 20, 30 days, whatever your capacity is, you need a bit of, bit patch of revision of what you have studied earlier. Okay, so revision is the key to success. तो समझ रहे हैं हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए. एनसीईआरटी तो बैठते हैं स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता इसके बाद क्या हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, कि हम क्या पर्सपेक्टिव लेकर पढ़ें, कि जिस हिंदुस्तान में मैं राज करने वाला हूँ, हिंदुस्तान बना कैसे, हिस्ट्री की बात बता सकता हूँ. तुम उसे कोर्स लेके पढ़ोगे, तुम उसे सिलेबस लेके पढ़ोगे, कभी नहीं होगा. सिलेबस आज तक मुझे एक स्टूडेंट बता दो, इवन टेल मी द वन टॉपर जो कहते हैं मेरा सिलेबस पूरा हुआ. सिलेबस तो कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस खुद इनफाइनाइट है. यूपीएससी का सिलेबस इनफाइनाइट है, जितना पढ़ लो उतना कम है.
लेकिन आप समझना क्या चाह रहे हो, सवाल ये है। समझना अगर ये है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा तो फिर वो फंस जाओ। आप याद करने के चक्कर में मत पड़ो, आप उसको आप सिर्फ एक चीज़ की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं कि आज का जो हिंदुस्तान है वो कैसे बना, कहानी क्या थी वो, जब आप उसे एज ए स्टोरी लोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। तो चली गई प्राची, वरना हम थोड़ा थोड़ा लिखाता हूँ, बाकी सब यहाँ लिखा होता है, आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं, आपको जो है ये वो मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी एजुकेशन की बात बताई, भूलोगे कभी? कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के मैंने आप कितनी देर बताया? 5 मिनट तो बताया ना, और सोचो 1.5 महीना पढ़ा दूंगा तो क्या होगा। तो वो आप, उसमें आपकी गलती नहीं है। आप हमने से कोई भी जब तक स्कूल और कॉलेज लेवल पे थे उसने किसी ने इस चीज़ की बात ही नहीं की कि इसे समझना भी होता है। हिस्ट्री से आधे लोग यूँ, बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल आर स्केर्ड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ डेट्स। हार्डली देयर आर 50 odd dates that you have to remember. वही चीज़ है ना, हम when you leave this class you should understand कि आज हमने क्या नया सीखा। Even if I am successful in conveying a message that okay, you have learned something today, my purpose is fulfilled. My job is to make sure that whatever is coming in the examination, that is coming, that is being taught in the class. अब बोलो सर हम बी का सी मार्क कराए तब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा काम वहाँ तक है कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो पेपर में आएगा, और आता है। Because my theory of sticking on to fundamentals and like, तुम कहाँ गोरखपुर से यहाँ कैसे आए? ट्रेन से आए। तुमने एक टिकट लिया, तुमने तय किया कि मुझे गोरखपुर से कौन सी पकड़ी, कौन कोई एक्सप्रेस आ रही थी, ठीक है। तुमने एक ट्रेन पकड़ी, तो आपने एक टिकट लिया, मुझे गोरखपुर से दिल्ली आना है। आप आ गए, जितने भी आप 1.5 दिन में पहुंच गए, 18-19 घंटे में आप पहुंच गए, आप आ गए। फिर आपने मेट्रो लिया, आप यहाँ तक आ गए, यही किया ना। लेकिन आपने बोला मुझे जो है गोरखपुर से जाना है कहाँ, दिल्ली, तो आप गोरखपुर से लखनऊ जो है एक्सप्रेस पे बढ़िया बना है, पहले बस से चलते हैं। फिर आपने कहा कि नहीं बस में मज़ा नहीं आ रहा, और लखनऊ से जो है दिल्ली तक जो है ट्रेन से चलते हैं। फिर आप आधे रास्ते उतरे नहीं, कानपुर में उतर गए, मज़ा नहीं आ रहा, तो कानपुर से फ़्लाइट ले लेंगे। क्या होगा इसमें? बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, पैसा भी खर्च होगा, और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच भी नहीं पाओगे। Once you have defined your resources, don't leave them, or else you will lose time, money, everything. NCERT अगर तय कर लिया कि NCERT से पढ़ना, तो फिर NCERT से ही पढ़ना, भले ही 50 बार पढ़ना पड़े। Define your resources from where you have to study, and once you have defined that, don't leave them. Don't leave them. Sir, old NCERT plus new NCERT combined? Yes, but first go with the old NCERT, then come with the new NCERT. That will be an add-on. Fine. ओल्ड NCERT भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको बैलेंस करके चलोगे तो it will be fine. One more thing, that when I'll start the sessions, what we are going to study? We are going to study GS, that is General Studies. टाइम क्या हो गया? अच्छा है 12, 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुँचना है, ठीक है। अच्छा गाड़ी लगी है, क्या बता रहा था? हाँ बताने वाला था। सो what this happens with me a lot. जीके, तो हम जीके नहीं पढ़ना है, हमें जनरल स्टडीज़ पढ़ना है. We have to study, we have to work on studies, means which is an analytical part, which is talking about understanding, which is talking about even you should have that skill to criticize someone, and criticism should always come in a constructive way. So we are going to do, like in economy, we will be criticizing the policy. If you are criticizing the policy, then come up with the solution. Anyone having public administration is optional. Mary Pakal for it called of constructive criticism. That is what we have to do. रोड खराब कहने से काम नहीं चलेगा.
ये रोड अच्छी होगी तो गाड़ियां जल्दी जाएंगी, एक्सीडेंट कम होगा, फ्यूल, दिस इज योर विजन. इन इकोनॉमी आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ टू क्रिएट दिस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. वो भी नहीं कि सर ने बोला था प्रो गवर्नमेंट लिखना है तो सड़क नहीं, सर बिल्कुल सड़क नहीं, सड़क खराब है, मानना पड़ेगा, लेकिन उसको बेहतर करने के क्या फायदे हैं और बेहतर कैसे किया जा सकता है. दिस इज हाउ यू विल वर्क ऑन. क्या दिखता है अब? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन सम IAS IPS ऑफिसर इन रियल लाइफ और मे बी ऑन यूट्यूब और एनीवेयर. देखा है ना सबने किसी ना किसी. क्या लगता है उनको देख के? क्या चीज है जो तुम्हें लगता है ये हम में नहीं है? They have a lot of clarity. Okay. And why they have this clarity? तुम नहीं हो? Because they have molded themselves like that. No. Because their knowledge is reflected in their personality. Because their knowledge is reflected in their personality. Whatever they have learned, they are not educated, they are well learned. Whatever they have learned, it is reflecting, it is like shining out of their, aura. प्रदीप कुमार देखा? अब बोलोगे सर पर्सनालिटी कि तो बॉडी बिल्डिंग जिम थोड़ी जाना है पर्सनालिटी के लिए. हमारी पर्सनालिटी, हमारा जिम जो है ना, हमारा जिम वो डंबल्स उठाने का नहीं, हमारा जिम है लाइब्रेरीज, हमारे जिम है किताबें. जितने किताबें, रीड गुड बुक्स ऑलवेज. इफ you should have a reading habit. You should have a reading habit, not just the newspaper. Read any good book you like. Sir, please suggest. There's a lot, whatever you like. You can read about good personalities, you can read about good motivational books, you have to keep your spirits high. How you can keep your spirits high? You can read good motivational books, and you can read about the good personalities, and by the time, like, there is one book called, I think, 100 Great Personalities of the World, something like that. You can read about them and tell me a single person in the world whom you call great and who has not faced hardships. No one. You'll never find someone. And when you read about their hardships, you read about Ambedkar. You read about Dr. Ambedkar. मैं भी तुमसे कहूँ ना, क्लास से बाहर निकल जा. बाहर बोलोगे सर मुजफ्फरनगर से हैं, बाहर देखें मिलेंगे बाहर. तुमसे बोल दो निकल जाओ यहाँ से, गोरखपुर से हैं हम, बताते हैं अभी आपको, रहते हो नोएडा, उत्तर प्रदेश में आता है. Imagine a boy, a school boy who has been humiliated worse than this for his whole educational life, for his whole school life. Dr. Ambedkar, humiliated. He was not being allowed to sit with the students. उनका पानी भरने वाला अलग था. वो वहां से पानी नहीं पी सकते थे जहां से बाकी बच्चे पानी पीते थे. वो पानी भरने वाला, उनका जो पानी भरने वाला था, जो उनके लिए उस घड़े में पानी भरता था, वो बीमार पड़ गया. उस बंदे को 7 दिन स्कूल में पानी नहीं मिला. सर ये से नेहरू, कितनी आसान जिंदगी थी. 14 साल जेल में रहे. मुश्किल है ना जिंदगी में इतना समय जेल में काटना. किसके लिए? देश के लिए, आजाद कराना था ना, अपने पीपल के लिए. अपनी सोच गुलाम नहीं होने देनी. सरदार भगत सिंह, माय हीरो, मतलब बिग फैन. कभी कभी मिला हो भगत सिंह से मिलो. रीड व्हाई आई एम एन एथिस्ट, लिखी है ना किताब उन्होंने, मैं नास्तिक क्यों हुआ. वो एथिस्ट भी थे. और वो आई डोंट नो हाउ यू कॉल दैट स्मॉल पॉकेट बुक साइज, दिस मच. गुटका कहते हैं हम इधर, गुटका कहते हैं, मुझे नहीं पता वो हमारे इधर तो गुटका मतलब वो छोटा सा, हाँ छोटा सा बिल्कुल किताब होती है ना, पॉकेट डिक्शनरी, स्मॉल पॉकेट डिक्शनरी. ही यूज्ड टू हैव दैट, ही यूज्ड टू हैव अ पॉकेट साइज बुक ऑफ गीता. हाँ रखते थे साथ में. और स्वामी विवेकानंद की फोटो रखते थे हमेशा अपने पास. सरदार भगत सिंह, एंड ही रोट व्हाई आई एम एन एथिस्ट.
कुछ तो बात होगी ना उसमें। 23 साल की उम्र थी ना जब फांसी लगी, and still he is alive. And I can tell you one good thing about Sardar Bhagat Singh. You can find haters of Gandhi, you can find haters of Nehru, you can find haters of Ambedkar, but tell me one person who hates Bhagat Singh. No one. This is his legacy of a 23-year-old. Read about them, you will feel good. So in the meanwhile, at least you should always have one good book with you. They make books your best friend, and try not to read on a screen. Have it a hard copy. भले यार वो फुटपाथ पे मिल रही होती है, मतलब वहाँ देश बड़ा मज़े का है यार। शराब का शोरूम होता है, किताब जो है फुटपाथ पे मिल रही होती है, वो भी डुप्लीकेट। This is, हाँ, am I right ना? We have liquor showrooms throughout the country now. AC लगा है, but किताब। It is good now. We get them cheaper. It's okay. I'm not saying it's not about the way we are getting it. The way it's in a way it's you. But see the society, like we are talking about where we have society has reached. फर्स्ट कॉपी लेके इलिटरेट लोग सड़क पे बैठे हैं कि तुम किताब खरीद लो। इसी समाज को तो समझना है, इसी समाज को से बात करनी है। This is the reality. चलो फर्स्ट कॉपी सही खरीद लो, उसमें कुछ गलत नहीं होता, उसमें कुछ उल्टी सीधी बात नहीं लिखी होती, वो सिर्फ उसका पैसा पब्लिशर पे और उसकी रॉयल्टी ऑथर पे नहीं जा रही, बस उसकी इतनी कहानी है। सर कहोगे सर पायरेसी सिखा रहा, पायरेसी नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में 800-900 रुपए की किताबें खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो रीड गुड बुक्स, रीड गुड लिटरेचर, रीड अबाउट गुड पीपल, दैट विल कीप योर स्पिरिट high, and once you have defined a resource, never leave that. Okay? Will this class be sufficient? Will this class be sufficient? This one or that depends on you. Like obviously I'll be completing the whole syllabus. How much you see, you can go for n number of classes, you can go for n number of test series. Classes means what you're saying, class notes, content, plus the books that I'll be referring to you, that would be more than enough. All the questions are coming from the same sources, that would be more than enough. But it depends how much you are absorbing, how much you are putting your, because see, you are going to be in the class for 2 hours, 3 hours max. 2.5 hours is the class, 3 hours max we can stretch. But 21 hours you are with yourself now. How you will take those 3 hours in the next 21 hours, that is how we'll decide whether it is sufficient or not. So I'll be telling you everything. I'll be covering each and every. But I cannot take guarantee of those 20 questions which are to be left. Because many of the times UPSC asks such questions which are not to be, कोई नहीं जानता वो. But हाँ, I can guarantee you कि ठीक है, हम जितना पढ़ाते हैं उसमें से आपको majority part prelims में आता है, mains में आता है. From our test series, and this is not just about me, all the faculties who are teaching here, they are competent enough to understand the exam well. So don't worry. And one more thing, I'll be requiring 2 things when I'll be starting. I think 20th June is the date. Yes, sir. History. I'll be requiring 2 things only from you all. One is trust, another is patience. बाकी मुझ पे छोड़ देना. Trust on me and trust on yourself, obviously, and patience. क्योंकि कई बार immediate result नहीं आएगा. Immediate in the sense result किसका? UPSC का नहीं. हम जो पढ़ रहे हैं, that how you will start reflecting that उसका. थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. और ख़ास तौर पे इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तब तो बिल्कुल देना पड़ेगा. जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है उनको इतना समय देना पड़ेगा. Sir, will there be any study material issued by the coaching? They will tell you. Whatever is from my side, I'll give you notes. I'll be giving you PDFs wherever it is required. I'll be dictating notes wherever it is required. I'll be doing everything from my side. Plus, I'll tell you some books. And yes, one more thing. If you're referring to economics for class 12th, there are 2 books in class 12th. One is micro, another is macro. Just refer the macroeconomics book. Don't go for microeconomics. अभी इतना, और अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती है, आप वो नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा अभी के लिए. जब शुरू करेंगे then you will catch up the things. ठीक है, please. Will there be any guidance
Definitely. This is a whole foundation means what? Everything. Don't worry about that. Even you will get a guidance from essay while I'll be teaching you history. Let's say there's an essay on history, I don't know. Possibly there'll be an essay on economy, especially, and there are essays which are coming on that. And now the essays are more philosophical in nature, so you can integrate it to any length you want. So we will be dealing with everything. My part, I have given a complete clarity how I am going to go. Okay, others more or less follow same strategy. Then you further there are more orientation sessions, na? Fourth is the second one. Yeah, it's okay. They will tell you how about their strategy. Fine. कोई सवाल? सिंपल सा सवाल है सर, इकोनॉमी का सब डेफिनेशन होता है, इकोनॉमी होता क्या है? अर्थव्यवस्था क्या होता है? यही पूछ रहे हो? हाँ, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी मतलब होता क्या है? इकोनॉमी मतलब देखो मैंने आपको बताया ना, दुनिया में पहले प्रॉस्पेरिटी का सिंबल क्या था? लैंड था। वो शिफ्ट हुआ किस में? इंडस्ट्रियल। फिर दुनिया की इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप कितने ज़्यादा समृद्ध हैं। इकोनॉमी एज अ सिस्टम इज एन इंटरैक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद द सोसाइटी। टू वे, हाउ सोसाइटी इज क्रिएटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाहर तो कुछ नहीं है। So there are four factors of production and there are four sector model. We have four sectors in the economy: household, firms, business firms, government and rest of the world. और इन चारों के ही combined interaction को economy कहते हैं। चारों का interaction होगा आपस में, चार इधर, land, labor, capital, entrepreneurship, household, that is basic consumers, business firms, government, rest of the world. एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एग्रीगेट डिमांड का, भाई कहाँ क्या हुआ? देख लो, बहुत है, इसको यूज कैसे करना मैं बता दूंगा। So this is a formula, मैं आपको इसको 50 जगह बताऊंगा, कहाँ एक ही फॉर्मूला है, जब मोड चेंज करना होगा वैसे यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इसकी कहानी समझ में आ गई फिर आप सब बना लोगे। कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इससे बाहर क्या है? फोर सेक्टर मॉडल क्या कर रहा है? कंज्यूमर कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? बिजनेस फर्म्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या तो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। Government's interaction with when you will talk about government's interaction with household, तो आप उसमें टैक्सेस को ले, अब ये भी आपस में रिएक्ट करेंगे, वो आपस में ऐसे भी चलेंगे और ऐसे भी चलेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके चलेंगे। तब टैक्सेशन आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी आ जाएगी। अब पैसे का लेन देन किसके बगैर नहीं? जैसे हमारे चार सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट हो गया। अब पैसे का इंटरेक्शन हम गवर्नमेंट को जाके नहीं कर सकते, बिजनेस फर्म गवर्नमेंट को नहीं कर सकती, हम बिजनेस फर्म को, तो हम किसके थ्रू करते हैं? बैंक्स के थ्रू। तो बैंकिंग सिस्टम आ गया, फ्लो ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी। हाउ यू इंटरैक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वहाँ बैंक्स भी होंगे और वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आ जाएगा। कौन सी करेंसी में करोगे इसको तय करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे। एज अ सिस्टम, एज अ होल, एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल डिमांड की बात करोगे तो आपका नेशनल इनकम, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए हमें एनसीईआरटी ही करनी है मेन, एंड देन योर। उसके बाद जब पढ़ाना शुरू करूँगा तब बताऊँगा कौन सी किताब पढ़नी है, अभी नहीं बताऊँगा। वो विल गो स्टेप बाय स्टेप। नहीं, राज वाली बात नहीं है, बाहर मिल रही है, पढ़ लो, लेकिन फिर तुम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। अल्टीमेटली सबको ग्रेजुएशन करना होता है, एवरीवन हैज़ टू डू ग्रेजुएशन, बट केजी में तो थोड़ी बोलते हैं ना ग्रेजुएशन में पढ़ लो, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। अभी के लिए इतना इज मोर देन इनफ। फाइन, एनी मोर क्वेरीज? सोच में पड़ गया यार तुम तो। साइकोलॉजिकल, और आपने जो बोला था प्रीलिम्स में, आपने
आपने भी बोला वीकनेस हमारा, क्या मतलब कैसे साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा बता देते। ये तो बोले कि डिफेंस कैसे करना है, क्या छोड़ना है, लीव करना है, क्या अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए समय लगेगा ना, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो अपने आप बता दोगे तुम। पहले बल्ला पकड़ना तो सीखो। अपने वेपन्स का बात करें तो हमारे पास किस तरह का वेपन होना चाहिए? वेपन्स का बात किया था। वेपन है पेशेंस, वेपन है मैच्योरिटी, वेपन है ऑब्जर्वेशन, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो ये सीखना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं आ सकता। इसके लिए आपको खुद को समय देना पड़ेगा। अब देखो इंटेंशन और मोटिव, देखो मुझे ना एयरपोर्ट पहुंचना है 1 घंटे के अंदर तो जल्दी से बता देता हूँ, पहुंच जाऊँगा। इंटेंशन की मैं बात कर रहा था। एक जज और मर्डरर में क्या फ़र्क है? सर वो बताता है राइट एंड रॉन्ग क्या है, मतलब There is no difference between a judge and a judge who is pronouncing a capital punishment and a murderer if you remove the intent out of it. नियत अगर हटा दोगे, दोनों के एक्ट से क्या हो रहा है? किसी की जान जा रही है। Am I right? इसीलिए यहां पर एक पॉजिटिव इंटेंट होना बहुत जरूरी है। दिन में 10 बार आईने के सामने जाके बोला आई एम एन आईएएस ऑफिसर। तुम खुद को भरोसा तो दिलाओ, तब तो तुम किसी और को भरोसा दिलाओगे वहां जाके इंटरव्यू में। तुम खुद को भरोसा नहीं दिला पा रहे हो यार कि मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं, मैं आईपीएस बन सकता हूं। Am I right? When you will make yourself believe that yes I can do that, then only you will convince other. You are at a stage you are not able to convince yourself. Start first, make yourself believe. So possibly we'll meeting after a month. So today I'm leaving to take classes elsewhere. Okay, I'll be back in a month and I want just 1% change in yourself. 1%. Rest leave it to me. कि आप इन चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं ना, आप इन चीज़ों को जो है ना पॉजिटिव इंटेंट के साथ देख सको, बस इतना। फिर जब हम मिलेंगे तो मज़ा आएगा। यू आर गोइंग टू एंजॉय फॉर श्योर। फंडामेंटल जितने एनसीईआरटी क्या बात कर रहे हैं कि पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो, वही ना फंडामेंटल्स, वही ना फंडामेंटल जितने सिखाना क्या है। फंडामेंटल मतलब ये है कि तुम क्रिकेट खेलना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें बल्ला पकड़ने का अगर तरीका नहीं पता तो क्रिकेट खेल कितना भी खेल लो, अच्छे फील्डर बन जाओगे लेकिन अच्छे क्रिकेटर कभी नहीं खेला पाओगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर बॉलर को भी तो छक्का मारना पड़ता है यार। तो बल्ला पकड़ना आना ज़रूरी है। एक बात बताओ, बेसिक क्रिकेट क्या है? एक बंदा बॉल फेंकेगा, दूसरा बल्ले से मारेगा, इतना ही है ना। अगर और अब उसके ऊपर तय होता है कि वो कितना एफिशिएंट बनेगा। लेकिन अगर किसी को वही नहीं आ रहा है तो वो बल्ला गलत पकड़ रहा है तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। If someone is holding bat wrong, I cannot teach you to be a good cricketer. If you want to be a good cricketer, first you are this part. I have to work that how you should, if you will see the cricket academies, they will teach you how to stand, what should be the position of neck. These are the fundamentals. Then you will automatically start driving. ये तो मैं समझ ही गया, क्रिकेट वाला है। यूपीएससी के फील्ड में सब्जेक्ट का फंडामेंटल, सब्जेक्ट का वो फंडामेंटल जो आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा तो था लेकिन आप भूल गए, वो फंडामेंटल। हिस्ट्री में उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हिस्ट्री इज अ मोर ऑफ अ स्टोरी, वहाँ कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कंसेप्ट जहाँ जहाँ है मैं आपको बता दूंगा। इकोनॉमी में बहुत काम आता है। आपने 10 करंट अफेयर पढ़ लिए, यू हैव रेड 10-20 मैगजीन्स ऑफ करंट अफेयर्स विच इज ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड यू डोंट नो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल दैट इज यूजलेस, because they will give you, consider the following statements about monetary policy. Statement 1, it includes quantitative and qualitative tools. Statement 2, bank rate is mandatorily less than repo rate. Repo rate has statement 3, at present repo rate is 4.5%. अब क्या करोगे? At present तो आपने पढ़ लिया, बीच वाला स्टेटमेंट घूम गए कि सर वो बैंक रेट ज़्यादा होता है कि रेपो रेट ज़्यादा होता है। मैं एक बात बता रहा हूँ,
तो हम उस पर मेहनत करेंगे। वो एट प्रेजेंट वाला तो मैगजीन में मिल रहा है और वो तो साल भर चलता रहेगा। हम वो जो 2 स्टैटिक पार्ट है ना, उस पर मेहनत करेंगे। उस पर मेहनत कर लोगे तो वो अपने आप ईजी हो जाएगा। समझ में आया? गुड। सो may I take the leave? Thank you so much. Thank you so much.